Well, ladies and gentlemen, welcome back and hope you're enjoying our show. Today we have in our Scope360 studio Mr. Nikul Amin, and we're talking about critical illness insurance. And we're going to continue our conversation. So, Nikul, before we went for a break, we talked about the depth of critical illness insurance. Now, living here in Ontario, I have OHIP. I have insurance through my employers. I drive a vehicle. I have insurance. I live in a house. I have insurance. I don't need any more insurance. Why would I want to get critical illness insurance, sir? That's a good question. Excellent question, you know. And ये काफ़ी अच्छी बात, मतलब कि मेरे पास काफ़ी clients आते हैं, and they always say कि यार मेरे पास I'm covered from the workplace. Yeah. Right. So एक वर्क प्लेस से जो आपको जो एक बेनिफिट मिलता है, एक प्रोटेक्शन है. ओके. ठीक है. दे आर गिविंग यू लाइक इन द ग्रुप इंश्योरेंस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, बेस्ड ऑन योर एज. वो एक जो भी कंपनी में आप काम करते हो तो एज के हिसाब से एक आपका एक छोटा सा एक प्रीमियम होता है. सर्टन टाइम्स कंपनी पे करती है, सर्टन टाइम्स यू नो कंपनी पे समथिंग, यू हैव टू पे समथिंग. राइट. मैं कहीं एक बैंक में काम कर रहा था. राइट. तो 100,000 के लिए मेरे को कुछ मेरा प्रीमियम होता है $10. राइट. तो आई टुक इट समथिंग, ये जो 1-2 सैलरीज आप ले लेते हो. उसके बाद में वर्क प्लेस से जो इंश्योरेंस है, यदि आपको पे भी करना है, लॉट्स ऑफ पीपल दे डोंट नो, आपके पे स्टब के अंदर कभी चेक नहीं करते, थोड़ा वो जो होता है. राइट. मेक श्योर यू चेक योर पे स्टब्स. तो ये भी है. उसके बाद में मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्क प्लेस से जो कुछ चीज़ है, इट्स ए बोनस. ओके. ठीक है. आपको जो चीज़ मिली हुई है, जॉब का कोई ठिकाना नहीं है. यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू वर्क. यू नो, एनीथिंग्स हैपन्स. दिस इज ऑल्सो आई सेड इन द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, लाइफ नेवर नो व्हाट कैन हैपन्स टुमारो. राइट. लाइफ नेवर नो व्हाट कैन हैपन्स टुमारो. और ऐसे टाइम के ऊपर आपको ये नहीं है कि मैं जहाँ काम करता हूँ, यू नो, आई एम गोइंग टू वर्क until I retire. तो ऐसे टाइम पे ऊपर मैंने काफ़ी लोगों को भी देखा हुआ है कि ना एक अच्छी दूसरी जॉब मिल रही है. राइट. दे हैव ए 1 month गैप, 3 month की गैप है उसके बीच में. राइट. और जो कुछ होना है वही टाइम पे होता है. In between the gap. In between the gap. And they have no insurance. They have nothing. And one thing to also remember is, so जो लोग कहते हैं, oh, I have insurance through my work. Well, that insurance is only valid as long as you're employed with that company. Absolutely. And as long as that company is in existence. Absolutely. Because if that company goes belly up tomorrow, your insurance is gone. तो लोग कहते हैं नहीं मेरे पास वो insurance मैंने 20 साल से पड़ी हुई है. Okay, तो आपकी वो 20 साल से insurance वहाँ पे है, but now you're 50. Well, what about the premiums, right? तो वर्क प्लेस में ये भी होता है कि आपको 5 साल के बाद में आपकी एज बढ़ जाती है. ठीक है ना. या फिर एवरी 2 years यू नो यू हैव टू रिन्यू, और अंदर जाके आपको अंदर देखना पड़ता है. हर एक कंपनी का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होता है. तो दे चार्ज यू समथिंग, क्योंकि ये तो नहीं है कि आपकी एज बढ़ती जा रही है. मुफ्त में हाँ. और आपका मेडिकल भी नहीं किया होता है. ठीक है. देयर इज नो कंपनी कैन पे यू द मनी विदाउट द मेडिकल. राइट. आप सर्टन अमाउंट तक वो बोलते हैं कि भाई ठीक है. राइट. इफ यू गो $500,000 और मोर, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, ओ आई एम कवर्ड फ्रॉम $1 million. देन आई सेज, ओ डिड दे चेक योर मेडिकल्स, यू नो, आपका जो फुल मेडिकल हुआ था. तो बोलते हैं आई डोंट नो. मैं बोला इट इज वेरी हार्ड टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि $1 million जब कंपनी को देना होता है तो ऐसे तो थोड़ा, अब किसी को हेल्थ इश्यू है और वो अंदर पूल में चला गया. राइट. आर दे गोइंग टू पे देम द $1 million? सर्टन अमाउंट तक कवरेज मिलती है उनको. राइट. तो वर्क प्लेस को तो मैं हमेशा कहता हूँ यू कैलकुलेट एज ए बोनस. you're lucky. राइट. आपको जो कुछ मिल रहा है दैट्स फाइन, फैंटास्टिक, बट द सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस आप बाय कर रहे हो, ये आपकी खुद की है. आप 10 साल 20 साल की टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो बाय की है, इट इज स्टे विथ यू. राइट. देयर इज नो नीड टू गो एंड कि भाई मेरा जॉब चेंज हो गया है कि ये है. राइट. It's locked based on your health. It's locked based on your age. And you would recommend that, because again, like a lot of the people can think, oh, I'm young, I'm healthy, I'm 20, I'm 25, you know, both men and women. Oh, I'm not going to get sick, but we don't know.
only God knows when our time is in this world, right? So would you recommend to our audience that's watching, start young? You know, like what age would you recommend for an individual to start? I always say to, you know, I give you my example. My kids, my son is around 19 years and my daughter is like 20, 21 years old. So as soon as they turn 18, you know, I apply the $1 million policy, term life policy, right? अब कितने लोग बोलेंगे कि यार वाई मेरे बच्चे अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, but if they are going in university, definitely they will have a bright and better future sometimes compared with us too, right? And they are going in some profession and certain kind of things. So young age पे आप term insurance 18 के बाद ही आपको मिल सकता है. So once you start and if health is good, now there is another option there कि you can get the discounted price too. Okay. So, in term insurance. Term insurance. और discount कैसे मिलेगा? Discount. You know I'm talking about discount. यार ने मुझे बताया कि हम यहाँ पे extra premium pay कर सकता हूँ, मुझे सारे पैसे वापस मिल सकते हैं. अब आप मुझे बता रहे हैं कि discount और भी मिल सकता है. I love this here. Tell me about this here. When I talk about making money and getting money back. I love it too. You know, जब भी मेरे client जब policy apply करते हैं and when they get the discounted rate, उसमें एक standard होता है. फिर उसके बाद में थोड़ा सा कम पैसा होता है, इसके बाद में यू नो यू हैव ए सुपर हेल्थ, यू गेट मोर डिस्काउंट देयर, राइट? तो आई लव इट, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं अपना मेरे फेस के ऊपर इतना स्माइल आता है. अभी भी स्माइल आ रहा है, देखिए, but just talking about it you're just glowing. You know, I try to save my client single cent and this is what my quality, you know, I love it. You know, ये मेरा पैशन है, ये काम करने के लिए. तो डिस्काउंट ये होता है कि there is you have to apply certain amount. Yeah. So at least $1 million का policy होना चाहिए. Okay. ठीक है. Which is a standard nowadays, really, yeah. The standard, right? Yeah. So $1 million का policy जब आप apply करते हो, आपका you know सब medical proper आ जाता है सही, ठीक है ना? तो now based on your height, weight, right, cholesterol, sugar and वगैरह वगैरह देखने के बाद में ये लोग कहते हैं कि भाई ठीक है. Sometimes कंपनी कितनी है ऑटोमेटिक बोल देती है कि भाई you got it, and sometime like you know इंश्योरेंस एडवाइजर है वो थोड़ा ट्राई करते हैं कि भाई माय क्लाइंट यू नो आई मेक श्योर टू दे कैन गेट इट द डिस्काउंटेड रेट. निकुल भाई, वन थिंग मुझे भी जस्ट बिफोर वी कंटिन्यू दिस कि जैसे आप बताए थे कि आपका बेटा आई थिंक ही इज 19 years old and you bought insurance from him, but before when we started talking about critical illness, you had mentioned about your background, your hereditary, कि आपके grandfather he was in his 50s. Your father was in his 50s when he passed. And, you know, reality is reality. You know, there's certain things we're born with, जो हमारे माँ बाप से आते हैं, वो हमारे DNA. And the other one is environment, हम कहाँ रहते हैं, जो हम क्या खाते हैं, वो होता है. So I guess in the back of your mind, you have to say, okay, मेरे परदादा, you know, मेरे अब्बा, and you have to think about yourself. Like, you know, I'm at this age, what's going to happen, right? So these are the things that लोग जब इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, they don't really think about in that depth for the long term. Would that be correct to say? बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये नहीं सोचते. अब मैं तो मेरे सन को कहा है कि भाई आई विश 55 के ऊपर मेरा बोनस है और यदि you know something happens to me, then you must have to look after yourself. You must have to see. You have to try and see and change everything. ठीक है कि फूड से लेके कि क्या कुछ है, राइट? अब वो तो यंग है, इसको ये समझ में बात नहीं आ रही है अभी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आई सीन. सो आई ऑलवेज यू नो आई मीन दिस इंडस्ट्री इज लॉन्गर टाइम एंड आई ट्राई टू व्हेन आई आस्क द क्वेश्चंस, राइट? तो ये है सर्टन कम्युनिटी है और सर्टन फैमिली है, वो डायबिटीज़ का यू नो वो बोलते हैं हमारे सब लोगों को था, राइट? तो वो उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं. Right, exactly. And this kind of the thing is there, then definitely you have to try to buy it earlier, right? Cash it out. वर्ल्ड में सिर्फ एक यही चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि उसको पैसे से आप खरीद नहीं सकते हैं, और वो है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस. ठीक है ना? You cannot able to buy with the money. Exactly. You can have all the money in the world, yes, but you cannot
by longevity of life or health or great health. We know that because I've seen people who have all the money in the world, they have the best doctors, they have the best medication, but when your time comes, your time comes. So we're going to continue our conversation with that. We're going to talk a little bit more about other things here. So once again, ladies and gentlemen, you're watching Scope 360 with Nasir Uddin and with my guest today in our studio, Mr. Nikul Amin, and we'll be talking about insurance, various types of insurance today, mostly about critical illness insurance and the pros and cons behind that and other things. So we're going to be coming right back. So once again, in between our breaks, subscribe to our channel, like it, go to the washroom, have a coffee, have some water, have some chai, come back and join us, and we're going to end the segment on more depth about critical illness insurance and a couple other things with Nikul Amin.